Can you see the screen? Yes, sir. Okay. So foundation system, basically first point is that in the design of footing, what is important aspect? So you know that this is at the base of the building. So first thing is to understand that what kind of load is acting at the base of the foundation. So whenever any building is planned, the area is known, the location is known. So soil report is taken out, the geotechnical investigation is carried out at the site, and based on the given plans and structural design, you analyze the structure and find the reactions at the base of footing. And those reactions are actually important because if you see this diagram, these reactions are shifted to the foundations. These reactions are actually shifted at the base of the footing. So if you see this 2D frame, this is a fixed support and having three reactions, two reactions at the base of the support. So these reactions which are developed at the base of the column are reversed. The direction of the reactions are reversed and taken to the foundation. So under each column the footing can come, or maybe we can join the foundation of the 2-3 columns, or maybe we can join the footing of all the columns. So that depends that actually what is the area of the foundation required, what is the spacing of the columns, what is the load acting on the column, and in that way we can compute the area required for the foundation. But important thing is that from where this load comes, so load comes from the reactions that are developed at the base of the column. And different kinds of reactions are computed, like the reaction due to the service loading, the reaction due to the ultimate loadings. So those reactions are important, and mainly the vertical reaction is plays a key role in computing the area of the foundations. And of course, in addition to the vertical reaction, the movement also plays an important role. The horizontal reaction is normally not considered so important because the weight of the building is too much, and the horizontal reaction is actually balanced by the lateral forces. Normally, the horizontally we are not considering for computing the area of the footing. The horizontal reactions are not considered, but vertical reactions and the movements are considered, that you can see in the frame. So how these reactions are basically computed? So actually you analyze the building, you make the model of the building and analyze the building, and then these reactions can be computed. And when the reactions are known, you need the other parameters, and these parameters are the allowable bearing capacity, and then you can find out the pressure under the foundations. So the reactions which are developed under the column and the allowable bearing capacity, that is computed from the geotechnical report. Based on that, you can compute the area of the footing required, and from the area of the footing that is required, you determine the size of the foundations. From the size of the foundations, you have the applied factor loading, and dividing by the area of the footing, you can determine the pressure under the foundation. Now, what kind of reactions are basically developed at the base of the column? In 2D, there are 3 reactions. In 3D, there are 6 reactions. When I am analyzing any 2D frame, the number of reactions are vertical reaction, horizontal reaction, and the moment. And it can be like I have written RZ, it means the vertical reaction, Rx is the horizontal reaction, and if Rx and RZ are present, the moment about the third axis My will be present. And the second one is the 3D model. When I analyze the 3D model, all the 3 reactions in X, Y and Z direction, where X and Y for me is a plan direction, and Z is the direction axis along the height. So when the movement, all the 3 movements are present, out of these 3 movements, Mx is the movement about the vertical axis, uh, M
mz is the movement about the vertical axis, and mx and my are the movement about the two plane axes. But again, out of all these reactions, the reactions for the foundations are different. Uh, Not all the 6 reactions are critical. Out of the 3 reactions, when we analyze it as a 2D element, the critical reactions are Rz and My, because horizontal reaction is of course not much important. And for 3D reactions, 3D model analysis, again Rz, Mx and My are the important reactions. So actually these reactions are shifted in such a way that these reactions are reversed for computing the area of the foundations. Normally we get the area only from the RZ reactions. The reactions that is the vertical reaction is mainly the key reaction that is to be used for computing the area of the footing. How we can compute the area of the foundation? So area is basically the total load or the total reaction at the base of the column due to the service load divided by the allowable bearing capacity. Why we use the service load and not the factored load? The reason behind that is because the factor is applied with the bearing capacity, and we cannot apply a lot of factors, as if we apply the factor with the load also, it will be very costly design. So factor of safety is applied with the allowable bearing capacity. The 3 factor of safety is applied. You know that the allowable bearing capacity is Q ultimate over allowable bearing capacity is Q ultimate divided by factor of safety. So in this way, we can compute the area of the footing, and the soil report is also important. So you must know that what is the soil report. So I'm showing you one soil report. There any so the detailed soil report is shown, and the soil report comprised of the many things. These include the design of the, what is the type of the soil, what is the bearing capacity of this can you see the soil report on your screen? No, sir. No, sir. No, sir. Okay, 1 minute. Yes,
Now you can see, I think. Yes, sir. So this geotechnical report is basically showing the site history, site investigation, surface, subsurface condition, discussion and recommendations, soil analysis, location, site history, local site history, site investigations. They actually provided the detailed soil report. This is from an international project, subsurface conditions and discussion and recommendations. So there are different foundation design, that footing a preliminary bearing pressure 120 kilopascal, width of the footing is suggested, thickness of the pad 0.6 meter for pad footing is suggested. So everything regarding the important parameters, some test detail, CU analysis, and other tables are shown, where showing the site location, the borehole which have been taken at which point, and then the detail of the SPT test, that how many number of blows are present at different locations, water content, N value. So from that you can compute this is the gradation. So this was the soil report. Coming back to the lecture. So actually the Q ultimate over factor of safety, this one is the factor of safety is applied. Can you see the screen now? Yes, sir. Yes, sir. So we compute the area of the footing. We will see the soil Q allowable from the soil report, and load P is basically the load from the, it is a reaction which is shifted to the foundations. Because as I have shown you in the first slide, that we reverse the direction of the reaction. So you can see that the vertical reactions and all the reaction directions on the left hand column, right hand column, central column, the reactions are actually in upward direction, but for the footing it will be acting in the downward direction. So from the reactions and allowable bearing capacity, you can find out the area required for the footing. Now next is the very important aspect, that how to compute the foundation's pressures under the foundation system, because the pressure is basically depending upon the cases. It can be like axial load case only, load plus movement in one direction, load plus movement in two direction, P and Mx and My. Sometime under the column there is only the one loading is acting. Sometime under the column load plus movement is also acting, and sometime under the column load plus movement in one direction and one movement in the other direction, both are acting. So this is important, that how many forces are acting. If you have the simple case when only the axial load is acting under the foundations, normally the pressure is a uniform. We consider it a uniform pressure. Now, I have shown you the three cases. First case is for the clay, and second case is for the sand, and third case, normally we don't take it a parabolic or this kind of curvy shape. We take it as a UDL, uniform distributed pressure. And what is the ordinate of this pressure? So load over area is the ordinate of this pressure. When it is only the central load is acting on the column,
The pressure under the foundation is the load over area. So it's just a UDL, uniformly distributed pressure. Point is that when the moment is also present, pressure when load and a moment act, one moment, I mean movement in the x direction, movement in the y directions, any single movement act, then what is the pressure? So the pressure will not be a uniformly distributed pressure anymore. You know that what is the stress due to the movement? My over I. And what is the stress due to the axial load? P over A. So in soil pressure, the plus sign means the compressive pressure, compressive stress or compressive pressure, and minus mean the negative tensile pressure. So due to the axial downward load, the pressure in the soil is always compressive due to P, but due to the movement, you know that the movement is acting at the centroid of the footing as it is shown in this slide. The pressure developed on the one side, you can say here in this figure on the left hand side of the footing, left extreme side of the footing is compressive because it is the movement is acting in the counterclockwise direction, and the pressure which is developed on the right hand side is a tensile pressure. So it is again My over I, but it is tensile. So maximum pressure is developed where both are compressive. Maximum pressure is developed where both the pressures P over A is all time compressive and My over I is compressive on one side, and My over I, the flexure pressure, is tensile on the other side. So P over A plus My over I is pressure on one side, that is a maximum pressure, is Q1 is maximum pressure, and on the other side the pressure is P over A minus My over I. So it is a trapezoidal pressure, it is a minimum pressure on the other side. In between the centroid and the extreme of the foundation's edge of the footing, the pressure will vary. It is like you can just change the value of y. Y is b by 2 for the edge of the footing, but in the middle, anywhere you can find out the footing. Just like how you compute the flexural stresses. So flexural stresses depends upon the movement and the location of the extreme fibers where you are computing the pressure. So you Excuse can me, just sir. put down the value of the y at different locations, yes, and then you can. सर सर एम वाई सेम है लेकिन Q1 में प्लस हो रहा है और Q2 में माइनस हो रहा है. जी जी, क्योंकि आपका जो प्रेशर है एक तरफ फ्लेक्सर स्ट्रेस प्लस में आ रहा है ना, कंप्रेसिव है, तो वो जो लेफ्ट हैंड साइड, अब ये जो आपको डायग्राम शो की गई है, अब मूवमेंट आपका कब आता है फुटिंग में, इट मीन दैट यू हैव द एक्सेंट्रिसिटी ऑफ द लोड. मूवमेंट का यही मतलब है ना कि लोड जो है वो एक्सेंट्रिसिटी पे एक्ट करेगा. तो क्या होगा कि मूवमेंट डेवलप होगा सेंट्रॉइड के अबाउट. व्हेन आई शिफ्ट दिस लोड टू द सेंट्रॉइड, इट विल डेवलप अ मूवमेंट. So on the one side, this movement will make a compressive stress. On the other side, the movement will make a tensile stress. ओके सर. So this, but the point is that how much is the eccentricity? This pressure is all the time trapezoidal? No, it can vary actually. It depends that what is the value of eccentricity. इसको हम कर्न कहते हैं. अगर आपका eccentricity जो है वो less than b/6 है, like in the left hand case. अब left hand case में the load is acting on the right side, eccentricity right पे है, तो pressure increases on the right hand side. But the point is that it will remain trapezoidal unless for which point. So the pressure will remain trapezoidal unless the eccentricity is less than b/6. जैसे ही eccentricity जो है वो increase करेगी, then what happen that
the pressure start increasing, टेंसाइल बढ़ता जाएगा in such a fashion that the equation, ये जो equation आप देख रहे हैं minus p over a my over I, when the both are positive, it will not, it mean that both are compressive. But when in the second equation minus my over I increases, then the p over a, it means that the flexural tensile stress जो है that will increase from the compressive stress p over a. So what will happen that the negative pressure will increase, negative बढ़ जाएगा pressure, and this will develop the tension on the one side of the footing. Footing जो है वो compression में हम कोशिश करते हैं कि हो सारी जैसे left hand side वाला हो, but when the pressure is the tensile pressure or the negative pressure, तो एक तरफ pressure जो है वो नेगेटिव में चला जाएगा, बट इफेक्टिव पार्ट जो है उसका हमने वही लेना है जो कंप्रेशन में हो. जैसे राइट हैंड साइड है तो एक्चुअली उसकी डायग्राम तो डिफरेंट बनेगी. ये प्रेशर जो आपके पास बनेगा, दिस प्रेशर इज लाइक असल में तो ये प्रेशर इस तरह चला जाएगा रियल में. अगर आप कंप्यूट करें तो प्रेशर इज लाइक दैट. वन साइड जो है वो विच इज शोन हेयर इन द कलर, जो आपकी ग्रीन कलर में शो की गई है, दैट इज द compressive pressure, but the force that is shown in the red color is the tensile pressure. So this tensile pressure basically that is developed under the foundation, this part, ये जो आपका pressure है, this pressure is present volume. So this pressure is basically the red color part is in tension, so we will ignore it. So if you see the diagram on the right, अगर आप right hand side की diagram देखेंगे तो you see कि सिर्फ जो आपका green part है that is effective. So it means that we have to consider only this pressure. और वो भी फिर जो है वो अपडेट किया गया है, द इक्वल टू द, इसकी कितनी विड्थ लेनी है ग्रीन पार्ट की वो भी कम की जाती है, b माइनस 2e इतना इक्वल हमने इसको कंप्रेसिव लेना है. So this red color mean that there is a tension in the soil and soil is not capable to take the tension. तो इतना पार्ट जो फुटिंग के नीचे आएगा that will be ineffective part. So there are different cases. अब यहाँ मैंने तीनों केसेस का शो किया है. फॉर एग्जाम्पल द फुटिंग जिसके अबाउट आप प्रेशर निकाल रहे हैं, द लेंथ उसकी लेंथ L है और यूर लोड इज एक्टिंग एट द रेड डॉट, जो रेड डॉट आपको शो हो रहा है. व्हेन द एक्सेंट्रिसिटी इज लेस देन L/6, तो फिर तो आपका पहला वाला लेफ्ट हैंड केस बनेगा. व्हेन द एक्सेंट्रिसिटी इज इक्वल टू L/6 या B/6 कह लें, ये L/6 है क्योंकि लेंथ है डायमेंशन, तो then it is a pure total triangular pressure. और तीसरा केस है when eccentricity is larger than L/6. तो फिर ये आपका ये वाला केस है when there is a tension in the soil. जो थर्ड वाला केस है when the eccentricity increase beyond the कर्न, इसको हम कर्न कहते हैं. ये जो आपका डॉटेड शो किया गया है, डॉटेड जो है पॉलीगन, डॉटेड शेप, ये शो कर रही है आपका कर्न. Until our point is at the boundary line or within the kern है जब तक, तो then your pressure is compressive. When the point in the C diagram on the right hand side moves out of the kern, तो फिर आपको ये tension आ जाती है footing में. तो you can see कि
इफेक्टिव जो पार्ट है साइल का वो कम होता जाता है, तो हमें बेस्ट ऑप्शन है कि मैं ए वाली ऑप्शन पे जाऊं. I should select the size of the footing in such a manner that the total soil under the foundation can be utilized. ताकि सारी साइल यूटिलाइज हो हमारी. तो एक्सक्यूज वो मी सर. लेफ्ट हैंड साइड वाला केस होगा. वैसे तो हमारा कभी रेस्ट्रिक्शंस अगर आ जाती है ना, जैसे कोई कहता है कि ये तो जी बाउंड्री लाइन है, फिर तो रिस्ट्रिक्शंस है तो हमें राइट हैंड वाला आ जाता है. लेकिन अगर मैं खुद लाइक करूं तो मैं कोशिश करूंगा कि सारी साइल यूटिलाइज हो. बट इट इज़ पॉसिबल, फील्ड में ऐसा होता है कि हमारे पास कॉलम की एक तरफ जगह नहीं होती, तो हमारा ऐसा टेंसाइल प्रेशर भी आ जाता है. जी, एनी क्वेश्चन? सर केस सेम है, जब सॉइल में टेंशन आती है तो उस वक्त डिजाइन में कोई फर्क नहीं पड़ता, या उस डिजाइन को हम चेंज नहीं करते जब सॉइल में टेंशन आती है? आप यानी कि कोशिश करते हैं कि डायमेंशंस को एडजस्ट करें, लेकिन अगर आप नहीं एडजस्ट करें, कभी आपके रेस्ट्रिक्शंस भी होती हैं ना, तो फिर जो भी आपका डिज़ाइन फोर्सेस बन रही है ना, जो डायग्राम नज़र आ रही है आपको यहाँ पे, फिर वही आप निकाल के इस पे डिज़ाइन कर देते हैं. ठीक है ना? ओके यानी सर. कि जो आपकी डायमेंशन दी हैं उसके मुताबिक जो आपका है, उस पे आप डिज़ाइन कर देंगे. चाहे वो नेगेटिव प्रेशर है पॉजिटिव है, लेकिन अगर आपने उस प्रेशर के अगेंस्ट थिकनेस और स्टील दे दी है तो देन योर फुटिंग इज सेफ. सिर्फ इसमें यही इशू है कि जो रेड पार्ट है वो जो प्रेशर है वो पॉजिटिव में चला गया है, नेगेटिव में चला गया, यानी कि टेंशन आ गया है. तो टेंशन हम साइल फुटिंग में नहीं डिज़ाइन करेंगे. लेकिन जब तक ये फुली कंप्रेशन में है, जैसे लेफ्ट हैंड साइड यहाँ फिगर है ट्रेपेजॉइडल है, तो दैट इज़ अ बेटर ऑप्शन. उसमें हम देख रहे हैं कॉस्ट वाइज ये चीज़ें देखी जाती हैं कि हम कॉस्ट में कितना यूटिलाइज कर रहे हैं उस चीज़ को. अब आपके पास एक और केस आ जाता है, ये यानी कि चीज़ें कुछ डिफरेंट हैं और शायद आपने ये पहले ना इतनी की हूँ. शायद ये वाला तो फुटिंग डिज़ाइन या फाउंडेशन में पढ़ा हो. लेकिन ऐसा भी होता है कि आपका कॉलम जो है वो, आपने देखा है कि मैंने पहली स्लाइड में शो किया है कि रिएक्शंस होते हैं कॉलम पे बेस पर. तो ये तो मैंने 2D में शो किया है ना, तो इसी तरह 3D की अगर मैं बात करूं तो रिएक्शन बेसिकली एक्टिंग एक कॉलम की बेस पर दो तरफ से भी आ सकते हैं मूवमेंट्स. यानी कि अगर कॉर्नर कॉलम है मोस्टली, तो वी हैव द टू मूवमेंट्स एक्टिंग एट द कॉलम. वन मूवमेंट इज एक्टिंग इन वन डायरेक्शन. अगर मैं एक्स और वाई की बात करूं कि एक एक्स एक्सिस है प्लान का फुटिंग का, एक वाई है, तो मूवमेंट इज लोड जो है वो बाई एक्सियल, जैसे कॉलम्स है ना, बाई एक्सियल बेंडिंग होती है, इसी तरह रिएक्शन भी आपके 6 हो सकते हैं. उसकी मैं बात कर रहा हूँ कि जब 6 रिएक्शंस हैं, तो उसमें मैंने आपको बताया था कि 3 रिएक्शंस आपके क्रिटिकल होते हैं फुटिंग डिज़ाइन में. 3D की जब मैं बात करूँ, RZ, MX एंड MY, तो ये वाला आप केस आ गया कि इस केस में क्या. सो दिस इज द केस व्हेन योर रिएक्शन इज एक्टिंग एज P and movement, two movements are present. It means कि actually the load is acting, P dash is acting at eccentricity. और इस फिगर में आपको दोनों eccentricities visible हैं. Both eccentricities are visible. One is EX eccentricity parallel to the EX X direction, and EY eccentricity parallel to the Y direction. Now what is the movement and the center of the footing? MX क्या होगा? The MX will be equal to the P into EX. और My क्या होगा? नहीं, My will be P into Ex and Mx will be P into Ey. Load into the relevant eccentricity will give you the moment, and you have to shift the moment at the centroid, because whenever you plot the foundation pressure, you have to shift your reactions at the centroid of the footing. आपको सेंटर में शिफ्ट करेंगे तो आप उसकी प्रेशर निकाल सकेंगे. So this case is a bit complex case because you have to determine the pressure in the 3D direction. दोनों तरफ आपको देखना होगा. इसके लिए ये आप डायरेक्ट नहीं कह सकते कि P over A plus My over I P over A. ये जो केस था ये था when only one movement is present. अब जब दो मूवमेंट्स आ गए हैं तो आप पैरेलल इसको साइमल्टेनियसली हमने देखना होगा. एंड इट डिपेंड्स के कौन सा पॉइंट पे आप ले रहे हैं प्रेशर. हियर यू कैन सी द स्मॉल A B C D. एट एवरी पॉइंट द प्रेशर जो है वो चेंज हो जाएगा. ए और बी लाइन में जो स्मॉल ए बी ऊपर मैंने शो किया हुआ है कॉर्नर में, दिस इज नॉट सेम एट द ए एंड बी इवन. रीजन,
बिकॉज वन मूवमेंट विच इज एम एक्स अगर वहां पे कंप्रेसिव दे रहा है इफेक्ट, तो एम वाई जो है वो मे बी इट इज गिविंग ए टेंसाइल इफेक्ट. सो ओवरऑल द फार्मूला आपका जो बनता है दैट इज पी ओवर ए प्लस माइनस एम वाई ओवर आई प्लस माइनस एम वाई एम एक्स ओवर आई. तो ये इस तरह का कुछ बनेगा. इसकी कुछ प्रेशर डायग्राम जनरली मैंने देखी थी कि इसको हम कैसे बनाया जाए नेट से. तो ये मैंने इसको जनरली यानी कि शो की गई है कि इट इज एक्चुअली प्रेशर मूवमेंट्स आर एक्टिंग ऑन बोथ साइड. तो आपने देख रहे हैं कि ये एज पर कैसे वेरी कर रही है मूवमेंट्स. तो मूव डायग्राम इवन एट द वन एज, द डायग्राम एट द अदर एज, द डायग्राम एट वन कॉर्नर, this diagram is not constant. So it means that when the more than one movement act at the base of the footing, और आप isolated footing डिज़ाइन कर रहे होते हैं, तो movement pressure can vary at each point, at each line, and that pressure is a kind of a contour variation type pressure ये बनता है. ये बिल्कुल रेगुलर नहीं बनता. अगर मैं हर पॉइंट पे निकालूं देन आई विल बी एबल टू कंप्यूट, या मैं स्ट्रिप वाइज निकालूं या लाइन वाइज, तो फिर मुझे इसका प्रेशर का आइडिया हो सकता है. सो फॉर दैट यू मस्ट नो दैट हाउ टू कंप्यूट दिस प्रेशर. सो आई विल शो यू द एक्सप्रेशंस कि ये आपका एक्सप्रेशन बनता है पी ओवर ए प्लस माइनस एम वाई एक्स ओवर आई वाई प्लस एम एक्स वाई ओवर आई एक्स. तो ये इसमें जो है वो प्लस में भी जा सकता है. ये दोनों सेम लिखे हुए हैं. असल में ये प्लस जो सेकंड में है लाइन, प्लस माइनस दोनों हो सकते हैं. इट कैन बी लाइक दिस प्रेशर. इसको हम जनरली ऐसे लिख लेते हैं प्लस माइनस एम वाई. जो तो आपका था वो दूसरा प्रेशर था. इसके अंदर अब एम वाई है एक, और एक जो है इसमें एम एक्स है. दो मूवमेंट्स हैं. तो हमने देखना है कि हमारा कौन सा मूवमेंट है और कैसे हमने प्रेशर निकालना है. फॉर एग्जाम्पल इफ आई कम टू दिस स्लाइड जब मूवमेंट प्रेजेंट था, यहाँ पे डिफरेंट पैरामीटर क्या क्या हैं आपके पास. ये जो डिफरेंट पैरामीटर्स मैंने ये फार्मूला लिखा है. व्हाट इज पी. यहाँ पे पी क्या चीज है. पी इज द लोड, ए इज द एरिया ऑफ फुटिंग, बी इंटू एल या बी इंटू जो भी कह लें, बी इंटू एल. इस केस में मूवमेंट जो है वो एक ही था. दैट मूवमेंट इज द movement about the centroid of the footing. What is y value? इस केस में अब y क्या होगा. yes, जो एक्सट्रीम प्रेशर आप निकाल रहे हैं दैट इज L बाई टू. क्योंकि ये लेंथ आ रही है ना, नीचे L नजर आ रहा है, तो L बाई टू हो जाएगा. और व्हाट इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया. सेंट्राइड जो है ये कौन सा आपने लेना होता है. सेंट्राइड जो वो एक्सिस मैंने नीचे शो किया हुआ है बेसिकली
इसकी ये डायमेंशन लेंथ ली हुई है ना, दिस इज L। सो सेंट्राइड क्या होगा, L/2। विच एक्सिस इज अ न्यूट्रल एक्सिस, द वर्टिकल एक्सिस। ठीक है, तो ये जो आपको ग्रीन कलर में है ये बेसिकली सेक्शन, इसको आप सेक्शन समझे। तो इस सेक्शन का मूवमेंट एक्टिंग अबाउट द सेंट्राइड विच इज विजिबल बाय डॉटेड लाइन, ये सेंट्राइड होगा। आपने इसमें हॉरिजॉन्टल नहीं लेना सेंट्राइड, द रीजन इज कि मूवमेंट जिस एक्सिस के अबाउट एक्ट कर रहा है वो आपने एक्सिस लेना होगा। तो इस केस में फिर आपका आई क्या बनना चाहिए, अगर मैं दूसरी डायमेंशन को बी कह दूं, अगर मैं इस डायमेंशन को बी कह दूं और इस डायमेंशन को एल कह दूं, तो अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या बनना चाहिए? यस एनी एल बी स्टूडेंट? एल बी क्यूब डिवाइड बाई 12। एल बी नहीं, क्यूब डिवाइड न्यूट्रल बाई 12। एक्सिस आप देखो ना, न्यूट्रल एक्सिस वर्टिकल वाला आ रहा है, तो एल बी क्यूब होगा या बी एल क्यूब होगा? बी एल क्यूब हो जाएगा। बी एल क्यूब होगा। ठीक है, बी एल क्यूब ओवर 12। मोमेंट वाई क्योंकि L/2 है ना, न्यूट्रल एक्सिस ये आपने लेना है, या इसमें ये नज़र भी आ रहा है कि सेंटर लाइन जो लिखा हुआ है ये न्यूट्रल एक्सिस है। अब आपने सेक्शन जो लेना होता है वो विड्थ ऑफ द फुटिंग, यानी कि इसके सेंटर से आपने काटा, और ये इस तरह आपने सारे पैरामीटर निकाल लेने हैं। ए जो है मूवमेंट भी आ जाएगा, वाई L/2 आ जाएगा। अगर मेरा बी और एल चेंज हो जाता है तो ज़ाहिर है L/2 की जगह इट विल बी B/2 एंड LB³/12 हो जाता मूवमेंट, अगर मेरा बी और एल इंटरचेंज हो जाए। So in case of the foundations, so we can determine ये सारे प्रेशर इसी तरह हम निकाल सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास केस ऐसा आ जाए when you have the foundations which is affected by both the pressures mx and my दोनों उसमें आ जाए, अब आपने फिर देखना होगा कि आपके पास जो डायमेंशंस हैं वो कौन सी हैं। तो P तो चले लोड हो गया, A जो है एरिया है। तो अगर तो मेरा My है तो फिर मैं उसको उसके लिए अगर मैं इसकी एक डायमेंशन को कह दूं कि दैट इज लेट्स से दिस डायमेंशन इज B डायमेंशन एंड दिस डायमेंशन इज, और सेंटर में आपके मूवमेंट ऐड कर रहे हैं, दिस इज अ सेंट्रॉइड लाइन, ये आपकी सेंटर लाइन है। And if the movements are acting in the center, not only in one direction but also in the other direction, then how to compute the pressure? तो लेट्स से आप कहते हैं कि आपने इसमें जो देखना है P, P is the total load in this equation. I want to, let's say, compute the there is a movement also which are acting, mx and my are also acting in this. Let's say mx is acting in this direction, ऐसे एक्ट कर रहा है। My जो है वो आपका ऐसे एक्ट कर रहा है। ये My वो हो गया, mx दोनों मूवमेंट्स आ गए।
and the load is also acting. इस केस की जो प्रेशर डायग्राम है वो क्या होगी? सो वी हैव टू सी कि इसमें जो आपके पास, let's say you have to select the point first, that which point you are plotting this diagram, and then you are able to draw it. So P is the load, 1 is the movement about x direction. ये आपको मैं अगर इस एक्सिस को कह दूं x और इस एक्सिस को हम कह दें this axis is y axis. So then which you have to see that what is the effect of that movement. अगर आप mx ले रहे हैं तो mx is the movement about the x axis. B is the width of the footing. So movement about x axis B था. And what is the x value? अब mx के साथ क्या आएगा? y आएगा. तो y क्या होगा इस केस में? अगर मैं एक्सट्रीम पर मूवमेंट ले रहा हूं तो यू हैव टू सी द डिस्टेंस पैरेलल टू द y एक्सिस. b divided by 2. यस, पैरेलल टू y एक्सिस बनेगा ना, b/2 बनेगा. और जब आप इसकी बात करेंगे इसमें my जे मूवमेंट अबाउट y एक्सिस होगा. my के साथ अब मैंने x लिखा हुआ है. x क्या होगा? डिस्टेंस पैरेलल टू द x एक्सिस लेना होगा, जिस पॉइंट पे भी चाहिए होगा. अभी मैं एक्सट्रीम की अगर मैं बात करूं, इफ यू वांट टू फाइंड आउट दिस एट एक्सट्रीम, सो दैट इज l/2. अगर बिल्कुल अवे मैं एक्सट्रीम एज पर निकालूं मोमेंट, तो इसकी बात मैं कर रहा हूं. अब आपके पास i क्या होगा? ix और iy क्या होगा? क्योंकि mx के साथ ix आएगा. रीजन, ये x एक्सिस है ना. ix क्या होगा और iy क्या होगा इस केस में? ix is lb³/12 and iy is bl³/12. इस तरह आपने ये सारी वैल्यूज जो आ रही है ना, यूज हो रही हैं, ये मैंने बता दी हैं. लेकिन प्लस माइनस का भी मैंने आपको नहीं बताया. डिड नॉट टेल यू अबाउट द प्लस माइनस. सो यू हैव टू सी दैट which sign is used. If that movement is developing the compression on that point, then with that movement it will be plus sign. And if that movement is developing the tension on that side, then it will be uh, negative sign. So plus minus, actually I have written generally here in the equation as plus minus. मैंने इसमें plus minus लिखा है, but you must know that whether it is a plus or minus, which sign will be used. So it depends that कौन सा point है. If I am computing at the right hand side center point, अगर मैं अब right पे निकाल रहा हूँ, let's say, और तो फिर क्या अफेक्ट होगा? ये थोड़ा मूवमेंट कंफ्यूजिंग हो रहा है. इसको ऐसे कर देते हैं. आपको ये बस देखना है कि इसका इफेक्ट कंप्रेसिव है या टेंसाइल है. you have to see that. फॉर एग्जांपल जो मेरा यहाँ पे mx है, that is giving a compression on the top side.
and my जो है that is giving the compression on the right side. ठीक है ना? तो अब आपने देखना होगा कि पॉइंट कहाँ पे लाई कर रहा है. फॉर एग्जांपल if your point is, let's say, this corner, ये अगर कॉर्नर आपका पॉइंट है ए पॉइंट, ये आप कॉर्नर अगर आपको पॉइंट आ जाता है, then what will be the effect of that a point. So at this corner, right corner, you can see that P over A is all the time compressive, but my movement जो है that is also compressive in this case, and mx is also compressive in this case. So at A point, the formula will be P over A plus myx over Iy plus mx y over Iy. And at A point, the distances will be L by 2 and B by 2. But you please try yourself and try to compute the movement at the different pressures at different points of the foundations. So how can you compute the different points, like all four corners हो गए, जैसे ये सारे पॉइंट शो किए गए हैं चारों कॉर्नर में. बेस्ड ऑन दिस मूवमेंट आप कोशिश करें दोनों मूवमेंट्स को एट द सेम टाइम कंसिडर करके जो फार्मूला आपको बताया है. सो प्लीज़ ट्राई टू ड्रा द डायग्राम इन एक्सेल शीट, कोई ऐसी आप बना लें और डिफरेंट पॉइंट्स पे लगा के ट्राई टू ड्रा द कंटूर अंडर द फाउंडेशंस which is affected by two movements. So by using this expression and properly signed plus or minus sign, you will be able to compute the pressure. This is a bit complicated, but it's not difficult, and this is a straight away. When there is a one movement, then the pressure diagram is a straight away, and when there is only axial load, the pressure diagram is a UDL. So this is important aspect that I have discussed. Today's lecture was mainly the concept of the footing, which is starting with how the load initiate acting on the footing, from where we take the load. Given data is nothing but the soil report only. So soil report से आप जो है वो load is taken from the reactions. From the soil report, you take the wearing capacity, you determine the area of the footing, and from the area, you determine the pressure on the footing. Pressure जो है उसके अंदर formula I have told you. When it is a pure axial case, the pressure is P over A. When it is a bending one movement case, then the pressure is P over A plus minus my over I. And when it is a biaxial bending case, the pressure is P over A plus minus myx over Iy plus minus mxy over Ix. This was an important lecture. Try to revise it and try to understand the concept of pressure, because the pressure is actually, if the pressure is right, your foundation design is right, and if the pressure is wrong, your foundation design will be wrong. So that's all from my side for today. If you have any question, you can ask. I should download the attendance. And all the students were present. Actually, not all the students are talking. One or two students are normally responsive. So try to be regular, and normally we will take the classes at the same time. And I'm not sure, I think we have to finish in 7 weeks, or we have to finish till 24th of December. Because someone was telling yesterday, Chairman Saab, that maybe we have 3 more weeks in January. So we have to see the notification.
Because if we have to finish all the course till 24 December, then we have to be fast.